गुड इवनिंग फ्रेंड्स लर्नर्स। आज हम फ्रेंच के इस एक स्पेशल वीडियो सेशन के थ्रू सीखेंगे कि किस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को लाइक करें एंड try to be there with us so that we'll be able to teach you how do you can calculate the mathematical equations in the language of French, mainly the basic equations in the mathematics. So without any delay, I shall take you through this PowerPoint presentation and we shall be able to learn how to do that. सो फ्रेंड्स, जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं दुनिया भर में कोई भी भाषा हो, whatever the language, mathematics and mathematical equations, mainly the basic algebra is quite similar. So किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को, इस पर हम बात करेंगे। एज यू कैन सी इन माय पीपीटी, वी कैन टॉक अबाउट कि फ्रेंच में जब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो हम उसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। वंस वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन, वी टॉक अबाउट प्लस, दैट इज to add, right? Similarly, if you want to subtract something, then we'll use a word called moins, that is less, right? Moins, less. Third, multiplication is being addressed by the word fois, right? Fois, right? So this is multiplication. And if we talk about division, then we talk about और वी स्टेट्स डिवीज भाग, डिवीज भाग। अगर इस चीज को हम थोड़ा सिंपल तरीके से समझें और कहें कि मुझे एक के साथ एक को जोड़ना है, इफ आई कुड से इन इंग्लिश, आई विल से 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। इन फ्रेंच आई विल स्टेट प्लस egal the. Here it is mentioned in the PowerPoint presentation. That meant what? I am adding 1 to 1, that is 2, right? So this is final uh, outcome, right? So if you are making some other equations which are here, like these, moi, set, that meant what? 7 subtract by 10, so this will be 3. So this is here 20 moins 7 égale, that is equals to égale, that is the is equals to sign in the language of French, that is called trois, that is third. Quatre fois, that is 4 times trois, right? Quatre fois trois, that is 4 fois is multiplication with. So kath is 4, fois is multiplication with, fois that is third. So if we talk about multiplication of any number, of any, with any number, any other number, we will have the outcome. So let's say if we talk about 4 multiplied by 3, that is 4 fois 3 égale 12, that is 4 multiplied by 3 will be 12. So here it is in the language of French. And last important mathematical equation uh, is called by the division. So if we talk about division, divide par 20 divise par 10 égale, it meant for 20 divided by 10 is equals to 2. So this is what the main or major mathematical simple equations: addition, subtraction, multiplication and division. And if you want to brush up your knowledge, please do this exercise. I will paste this exercise for you. And if you are honest with yourself, इस वीडियो को देखते देखते आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व करें। जैसे यूथ प्लस सेंक एगाल, दैट इज 8 + 5 is equals to 13. Sec A egal 5 and
1 is equals to 6. So these are the exercise. These are there with many or sufficient exercises for both all sort of equations related to mathematics like addition, subtraction, division, and multiplication. So what you are waiting for? Why don't you brush up your learning habits, mainly the mathematical equation in the language of French? If you knows numbers well, if you knows how to do or deal with this particular pattern, you'll be able to learn the language. तो इस बात के साथ कि आप मैथमेटिक्स की सिंपल जो इक्वेशंस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को फ्रेंच में कर पाएंगे। होप ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो के साथ लर्न करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, गुड नाइट।